microorganism threat and foe. So in this chapter we have discussed about the microorganism, types of microorganism, useful microorganism, harmful microorganism, and how food can be preserved from the microorganisms, isn't it? Food preservation, that is, we have discussed. Now in this video today we will be discussing about the nitrogen fixation. Then in the next video the last topic of the chapter will be nitrogen cycle, isn't it? For nitrogen cycle, before going to that topic we have to discuss about the nitrogen fixation. What is nitrogen fixation actually? Is nitrogen fixation. Now we know that in the atmosphere the composition of air is 78% is what? Nitrogen, and 21% is oxygen, okay, and rest other gases are present in 1%, like carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen gas, sulfur dioxide, helium gas, argon. All these gases are present only in 1%, okay, while the abundant gas is nitrogen. So nitrogen fixation. Now we know that abundant nitrogen is present in the atmosphere in an abundant form, but this nitrogen cannot be directly consumed or absorbed by the plants, not either by the animals, not even by the animals also, but in our body, in plants, in animals, nitrogen is present, but in the compound form. This nitrogen, the nitrogen cannot be taken. In this air nitrogen is present, but this nitrogen cannot be directly inhaled or absorbed by the plants or animals. Like carbon dioxide is directly absorbed by the plants, isn't it? And animals inhale oxygen. So likewise, nitrogen directly cannot be taken. Okay, can be taken from the atmosphere and can form nitrogenous compound. So that's why nitrogen, which is present in the air, it is abundant form. It has to be first converted into usable form or soluble form. Okay, that is known as nitrogen fixation. जो नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन है, उसको जब कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाते हैं, प्लांट यूज कर सकते हैं या एनिमल यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, so that is what nitrogen fixation is. That process of conversion of atmospheric nitrogen into soluble form of nitrogen or usable form of nitrogen is called as nitrogen fixation. So here I have written nitrogen fixation is the process by which atmospheric nitrogen is converted by either natural nitrogen gas, atmospheric nitrogen is converted either by natural or industrial means. Natural process से या industrial process से, ठीक है, industrial means से जब usable form में convert होता है, means to a usable form of nitrogen, usable form of nitrogen such as ammonia या different और भी बहुत सारा nitrogenous compound form है, okay, or nitrogenous compound in soil for the plants, okay. इसी को बोलते हैं, इसी process को बोलते हैं nitrogen fixation. So nitrogen fixation means what? The conversion of nitrogen gas into usable form or nitrogenous compound form in the soil is called as nitrogen fixation. जब नाइट्रोजन, जो जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट उसको डायरेक्टली कंज्यूम, डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो उसको यूज करने के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. कैसे? बाय नेचुरल प्रोसेस से या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, तो वो पहले कन्वर्ट होगा एंड जो कन्वर्शन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ सी नाइट्रोजन फिक्सेशन types of nitrogen fixation. Actually nitrogen fixation is of three types. नाइट्रोजन तीन तरीके से फिक्स होता है, मतलब नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन, यूजेबल नाइट्रोजन बनाने के लिए तीन वे से बनता है, ठीक है. यूजेबल फॉर्म में किस तरह से बनता है? तीन प्रोसेस है, दैट इज फिजिकल प्रोसेस एक है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक है जिसमें दो आता है, एक है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन या उसको लाइटनिंग भी बोलते हैं, and another is industrial nitrogen fixation. एक है lightning and another is industrial nitrogen fixation.
will be formed. Okay, so these nitrate and nitrites are present in the air. So this, अभी lightning की बात में क्या होगा? We know that rain occurs. Now it's raining also, isn't it? तो raining होने से क्या होगा? जो rain water है उसके साथ में ये nitrate and nitrite क्या होगा? Reaction होगा, ठीक है? Nitrate और nitrate, ये जो nitrate and nitrite है ये reaction होगा और reaction होने के बाद में ये क्या form करेगा? ये compound form करेगा nitrous acid and nitric acid, ठीक है? nitrous acid and nitric acid. अब ये एसिड फॉर्म है तो ये तो वाटर के फॉर्म में है, ये रेन वाटर के साथ में सॉइल में आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड. दिस इज व्हाट यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड. दिस यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड when it will come in and mix with the soil, now plant can directly absorb. This is the usable form of nitrogen. So nitrogen fixation by lighting, okay, means natural nitrogen fixation. Now see, another nitrogen fixation is, another type of nitrogen fixation is industrial nitrogen fixation. Industrial nitrogen fixation means what? Actually what happens in the industries, ठीक है? ammonia NH3, ammonia is produced, ammonia produce करते हैं, form करते हैं और वो ammonia को convert करते हैं into like chemical fertilizers. The fertilizers which are used in the crop field for the healthy growth or good production of the crops, isn't it? So this nitrogenous compound or these fertilizers, okay, this fertilizer like urea is one example of fertilizer. So when this urea, you brought urea from the market and spread over your crop field, okay, या फिर जो भी प्लांटेशन आपने किया है उसमें स्प्रेड कर दो, उसमें डाल दो, तो आप देखोगे कि आपका प्लांट हेल्थियर वे से ग्रो हो रहा है. Why? Because in this urea the nitrogen is present. This is what nitrogenous compound, a nitrogenous compound, okay, and it is produced or formed in industries. So यही क्या है, ये जब हम स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, ये plant can be directly taken, isn't it? So that's why it is called as industrial nitrogen fixation. So in industrial nitrogen fixation, ammonia is produced in industries and it is converted into various kind of fertilizers such as urea. So in that way nitrogen fixation is done, that is called as industrial nitrogen fixation. Okay. The third type of nitrogen fixation is biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation. First one is physical nitrogen fixation and another is biological nitrogen process. तो physical में क्या होता है, यहाँ living forms नहीं होता है, ये फिर जैसे कि ये lightning या industries से उस form में होता है कि नहीं, chemical form से होता है. तो लेकिन जो ये biological nitrogen fixation है, biological nitrogen fixation में क्या होता है कि life, bio means what? Life. तो life क्या करता है, living form जो होता है, life जो होता है, ये actually जो atmosphere में जो abundant way में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, soluble form में convert कर देगा. So that's why it is called as biological nitrogen fixation. So certain bacteria are there, okay, which show symbiotic relationship. Symbiotic relationship का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम. राइजोबियम it remains in the root nodules of the plant. लाइक लिगुमिनस प्लांट जो होता है, पल्सेस या लिगुमिनस प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है, उसका रूट नूडल्स में ये राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट रहता है. और जो लिगुमिनस प्लांट है वो क्या करता है, उसको प्रोटीन का जरूरत है, तो उसको फूड का जरूरत है, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए डायरेक्टली नाइट्रोजन दे कैन नॉट कंज्यूम. तो ये जो राइजोबियम इसके अंदर में रह रहा है लिगुमिनस प्लांट के अंदर, so what they will do, they will make a bond or a relationship between them, that rhizobium will convert the atmospheric nitrogen into soluble form. ठीक है नहीं, जो ये rhizobium है वो एटमॉस्फेरिक जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको
उसको कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंड देन प्लांट विल लिग्यूमिनस प्लांट विल एब्जॉर्ब दैट नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड make more complex compound of nitrogen that is protein and ये जो relationship है मतलब राइजोबियम एक तरीके से लिग्यूमिनस प्लांट को हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने के लिए और लिग्यूमिनस इन रिटर्न में क्या करेगा लिग्यूमिनस जो प्लांट है वो इन रिटर्न में राइजोबियम को भी तो हेल्प करना है सो दैट लिग्यूमिनस प्लांट विल प्रोवाइड food to the this rhizobium so that type of relationship is called as symbiotic relationship तो ये जो राइजोबियम है दिस राइजोबियम विल convert the atmospheric nitrogen into soluble form of nitrogen then here also ये कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो symbiotic relationship नहीं रखते हैं with the lignous plant ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ही सॉइल में प्रेजेंट होता है so that are called as free living microorganisms फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं ये भी रिलेटेड होता है इन कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ठीक है कन्वर्ट कर देंगे सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है सो द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स like rhizobium which is a bacteria and free living microorganisms is called as biological nitrogen fixation. So in this video we have discussed about the nitrogen fixation and types of nitrogen fixation. So in brief let's discuss about the nitrogen fixation. Nitrogen fixation, what is nitrogen fixation? Nitrogen fixation is the process in which atmospheric nitrogen is converted into soluble form of nitrogen. Okay, usable form of nitrogen. So that is called as nitrogen fixation. And nitrogen fixation are of three types. Okay, जिसमें actually two types है जिसको हम बोलते हैं physical nitrogen fixation and biological nitrogen fixation. Physical nitrogen process में दो हैं जैसे कि lightning है और एक industrial nitrogen fixation. तो when lightning occurs, the nitrogen molecules, the nitrogen gaseous nitrogen will break down into nitrogenous and nitrogen atoms or simplest form of nitrogen and that simple form of nitrogen will combine with the oxygen it will form nitrate and nitrite then that nitrate and nitrite again when rain occurs it will react with the rainwater and it will form the soluble nitrogenous compound that is nitrogenous acid nitrous acid and nitric acid okay so this is one type of nitrogen fixation in which nitrogen gas is converted into soluble form of nitrogen. This is one type. Then another type is industrial nitrogen fixation. Industrial nitrogen fixation is what in the industries the ammonia is produced. Ammonia is formed from the nitrogen and hydrogen. So that ammonia when it is produced in the industry that will convert it into like यूरिया फर्टिलाइजर्स या यूरिया में बना देंगे तो ये यहाँ भी क्या हो रहा है देखो जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉर्म हो गया isn't it? So this is another type of nitrogen fixation. Then last is biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation means here the life the certain bacteria that is rhizobium and free living microorganisms that will convert the atmospheric nitrogen into the soluble form of nitrogen. So this is called as biological nitrogen fixation. Okay. So in this chapter we have discussed about the nitrogen fixation, which is the second last topic of the chapter. In the next video that we will be discussing about the nitrogen cycle, which is related to this